While Indian skipper understandably is ecstatic after India thrashed England in the World T20 last evening. And MSD is of course all pleased to have the problem of plenty now on his hands. Let's take a listen to a captain who's finally perhaps getting a grip on things. Problem of plenty to hui hai, but I can assure you, problem of plenty is better than problem of not having that one guy. एक difficult decision रहेगा. The reason being आप किसको drop करके खिलाएंगे. The middle order has done well, and the two openers that we have got are the best openers that we have got who can win matches on their own, and Gautam did really well in this particular game. So it will be a difficult decision. As of now, I don't know frankly, but we'll have to see what is best for the side and accordingly decide. I think उन्होंने अच्छी bowling की. अगर आप especially bowling का length देखें तो छोटे बॉल नहीं डाले उन्होंने. बैट्समैन को आगे ड्राइव करने के लिए बुलाया और जो उनके वेरिएशंस है उनका अच्छा उपयोग किया. एंड ऑल्सो थोड़े माइंडसेट जो था उनका काफी एग्रेसिव माइंडसेट था आज के मैच में. फील्डिंग के बारे में बहुत ज्यादा परेशान नहीं थे कि यहाँ फील्डर चाहिए वहाँ फील्डर चाहिए. वाज वेरी फोकस्ड एंड ही रियली वांटेड टू डू वेल. सो अगेन इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर अस, क्योंकि अगर हम एक बैट्समैन कम जाते हैं तो एक ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़ी मोड़ी नीचे बैटिंग भी कर सकते हैं, स्लॉगिंग भी कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अस. बोलना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक परफॉर्मेंस अच्छा रहा है. अगर आप अफगानिस्तान मैच के बाद ये वाला गेम देखें तो हमने इम्प्रूव किया है थोड़ा इस पर्टिकुलर गेम में. बट अभी आगे टूर्नामेंट में बड़ी टीमें आएंगी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करना इम्पोर्टेंट है. हर मैच में आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा. सो आई थिंक इट लुक्स गुड. अभी अच्छा लग रहा है और होपफुली कमिंग जो 3 मैचेस हैं उसमें भी हम अच्छा करेंगे. आई पर्सनली rate him very highly. That doesn't mean I don't rate Yuvraj highly because I promoted him. I think he's someone who can play all different kinds of stroke right from the very start. And especially in this format, if you see, he's one of the most successful batsmen. Along with Suresh Raina, he's someone who has been quite consistent. When it comes to the T20 format. And he can play in different gears. If needed he can accelerate, if needed he can play the big strokes and run well at the same time also. So our strength, I think, of course, is to play the big shots, which means wicket in hand is something that's very crucial for us. So first 10 overs are critical. If you don't lose too many wickets, and if you're 70-75 runs, then there's an ideal platform for the batsman coming in to come and play the big shots. So I think he's doing or taking up the responsibility really well.